Hello, everyone, and welcome to Reset and Rise, the podcast where we dive deep into the stories of transformation, resilience, and growth. Hi, I'm your host, Juhi Jethani, and I'm on a mission which is very simple to help you reset your mindset, rise above all the challenges, and unlock the best in you. And week by week, we sit down with the incredible guests who have turned their setbacks into the stepping stones. And also today, we have someone special today with us. So get ready, and because this conversation might just change the way you see your own journey. So on 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 this episode, we welcome Purva Pawan, who is going to speak about motherhood, the emotions, pregnancy, and happy mama in making. So today I'm very pleased to have Purva Pavan, the happiness catalyst and Garbh Sanskar coach with us to guide us more on pregnancy. So welcome Purva. Hello, everyone, and hello, Jui. Thank you so much for inviting me on this beautiful, amazing platform. Thank you so much, Jui. I'm glad to be a part of this. And So most welcome to this Reset and Rise, because this is one platform where I want to help each and everyone overcome their challenges with the experts, with the specialized people who are here to help us. So today we are going to discuss about pregnancy, motherhood, and the emotions related to it. So little we would like to know about you and your journey. yes. Hi, everyone. I'm Purva Pavan, and I call myself as a happiness catalyst and a Garbh Sanskar coach. That is a coach who's helping mothers come into their best selves, a mindful mama maker coach. So I would like to call myself as a happiness catalyst. Why? Because that is the basic fundamental requirement which everyone should be in. A state जिसमें सबको रहना है, दैट इज बीइंग इन अ स्टेट ऑफ हैप्पीनेस. और ये चीज उसी टाइम क्यों कही जाती है जब किसी लेडी को देखते प्रेग्नेंट है कि खुश रहो, टेंशन मत लो. ये तो हमेशा सबको बोलना चाहिए, राइट? सो लेट मी टेल अ बिट अबाउट माई सेल्फ. So I'm on a mission to, guide women to actually come back into this basic state of joy, spread smiles, and empower them to live a must mazedar life, I would call it. And myself, Lovely. I'm, yeah, yes. So I'm myself certified as a counselor. I've done my master's of social work with a specialization in family and child welfare. And it's over a decade of experience. And last 2 years, I founded the Mom Academia, which is to empower all the women who are struggling in different areas of their life. एंड आप हाँ, खुश हो ना तो सब कुछ ठीक हो जाता है. वी बिलीव इन द पावर ऑफ सेल्फ बिलीफ. सबसे पहले taking right. life in a must way, you're vibrating your energy and focusing, having building a positive mindset, and you being that unstoppable woman. Absolutely, absolutely Yes. amazing. And your mission, so more power to your mission, because uh, women who are struggling this pregnancy, they struggle silently. They don't have a hand-holding support, and they are not free to speak to anyone. और उनको किसी से बात करने से पहले भी बहुत सोचना पड़ता है. So Yes. yes, she is the amazing person who gives the hand-holding support to every woman who is struggling with this pregnancy. So, Purva ji, मैं पहले जानना चाहूंगी that what are the emotions? Means what role does emotions play in pregnancy and motherhood? I would like to say over here na, emotions is like the first school जहां से एक बेबी सीख रहा है. It is like the first school. Agar Ma is feeling happy, she's calm, she's feeling joyful,
बेबी सेम एनवायरनमेंट में, लाइक बेबी गेट्स द सेम वाइब्रेशन। इट इज बेसिकली मैं जो बात कर रही हूँ फोन से, दूसरे इंसान को वही सुनाई दे रहा है। तो ये सेम फंडा है यहाँ पे भी। हाउ यू आर फीलिंग, हाउ यू आर टॉकिंग, हाउ योर थॉट्स एंड इमोशंस आर, दे आर द फर्स्ट स्कूल ऑफ लर्निंग फॉर योर बेबी। आपका बेबी का इमोशनल ब्लूप्रिंट यहाँ पे तैयार हो रहा है। दैट्स व्हाई इमोशंस प्ले अ सुपर ट्रेमेंडस इंपॉर्टेंट रोल इन प्रेगनेंसी। आप देखते हो ना, माँ जैसे बेबी ऐसे कहा जाता है। तो दिस इज हम्म। लाइक द वे द सीड्स आर द सेम इज द ट्री। एक आम का बीज बोओगे तो आम ही निकलेगा। तो हियर यू हैव टू ब्रिंग ऑन दिस क्वालिटीज ऑफ इमो all the beautiful emotions, and you will see your tree blooming into a beautiful one. Wow, that's most of the people are not aware about their emotions. Like many women, they face ups and downs while trying to conceive. So, Yes. how their emotions affect their fertility and changes of pregnancy? Yes, like you rightly said, like most of the women don't focus on emotions. ज्यादातर किस पे फोकस होता है, हमारा डाइट पे, मेडिकल केयर पे, एंड इमोशंस लगता है कि ठीक है वो संभाल लेगी अपने आप को। बट दैट इज नॉट ट्रू। लाइक आई रिमेम्बर माई सेल्फ, आई एक्सपीरियंस्ड माई प्रेगनेंसी वॉज ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ कोरोना, जब सब एक्चुअली बंद था और मैं अंडर हाउस अरेस्ट कह सकती हूँ उस टाइम पे थी। And it was, difficult even going out to the doctors. Actually, everything was closed down during that 2020. Right. So I remember in that phase, in the fourth and fifth month, some reports में complications आ गए थे, for which I was in such a place जहाँ से reports आने में ही it used to take like it took around 2 weeks. And I remember Mm. everyone in the house was disturbed उसकी वजह से कि पता नहीं रिपोर्ट्स ठीक आएंगे नहीं। इट वॉज बेसिकली द डॉक्टर सेइंग दैट द चाइल्ड माइट बी स्पेशल, एंड देन दे डिड फर्दर रिपोर्ट्स, एडवांस रिपोर्ट्स, उसके लिए एडवांस टेस्ट जो होते हैं। तो उस टाइम पे आई फाउंड एवरीवन अराउंड मी आर इन टर्मोइल, बट माय मॉम वाज आस्किंग मी तुम कैसे खुद ऐसे, लाइक बिकॉज आई न्यू दैट, आई न्यू कि आई हैव टू, the way I feel, it's going to pass on to the baby. And there was something which told me from within, which said ki everything is fine, everything is fine. I know, and I kept giving those words to myself. And I remember those emotions, and this thing has what has shaped my baby now. I find him to be an amazing personality, which from whom I myself I'm learning. Like I feel Wow. the I feel blessed. I feel blessed to listen to the things he speaks, and the small little, the way he enjoys life, childlike, is Right. something amazing. So my and I remember I myself enrolled in उस टाइम पे जो इस्कॉन टेम्पल का हरे कृष्णा मिशन होता था। आई वॉन्टेड जस्ट टू बी काम। आई वॉज लिसनिंग टू ऑल स्पिरिचुअल, मुझे लगा था आई एम सरेंडरिंग। आई वॉज इन दैट सरेंडर मोड कि मैं बस एंजॉय कर रही हूँ, मैं बुक्स पढ़ रही हूँ, मैं स्तोत्र श्लोक सब सुन रही हूँ। तो आई वॉज इन दैट मोड कंप्लीटली, and that is that mode. अगर I feel I was in that stress mode, I'm sure my son must have been, अभी तक ओवर थिंकर बन जाता हूँ कि नहीं, चिंतामणि बन जाता। पर अभी I can find it in him, I find this and that's what I feel, I feel it's very important for a woman to emphasize and think about what she's going through at that moment. And the moment कि हाँ ups and downs आएंगे, ups and downs तो आएंगे, you will go in bad moods, you will feel bad for some things, but then recognizing it and डिसाइडिंग कि इसको 4 दिन तक लगे रहना है, 4 मिनट में बंद करना है, वो आपके ऊपर है। सो यू हैव टू Right. प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर प्रेगनेंसी, where you are building your emotional resilience, and emotionally you're surrounded and feel that love and care for yourself first. Yeah, so and it Right. affects how it affects fertility. Let me go to it. Like when you asked about it, Chand, क्या होता है? When we are stressed, it blocks our body in many ways inside. वो हमें subconscious level पे पता भी नहीं होता. So especially when a woman is going for
मे बी ट्रीटमेंट्स टेस्ट करा रही है, IUI IVF करा रही है, सो शी स्ट्रेस्ड उस टाइम पे कि होगा या नहीं होगा। हर एक इंडिकेशन के बारे में वो चेक करने लग जाएगी कि स्पॉटिंग हो रही है, म्यूकस आ रहा है, हर गूगल करके बैठ जाएगी। आई हैव डन दिस, दैट्स व्हाई आई नो व्हेन आई वाज अंडर गोइंग ट्रीटमेंट्स। Right. आई हैव, मैं खुद के ऊपर पोस्टमार्टम मीन्स क्या कहते हैं वो, हर चीज गूगल बाबा को देख के ये करना, आई माई सेल्फ हैव डन दिस। So I remember, like, stress, and every time it was a failure. It is a failure. This failure was, it is like 10th में कैसे फेल होते हैं ना, वैसे वाली फीलिंग। Like literally, Right. you feel shattered कि again you have to do everything again now. And again you're getting like no to pink lines. And this time, like, and especially IUI IVF को जाते हैं तो हमारे इसमें रहता है कि चलो इस बार हो ही जाएगा, डॉक्टर्स कर रहे हैं ना अपना काम। बट यहाँ पे हम वो नहीं समझते कि हम कहीं पे स्ट्रेस भी रह रहे हैं, वो इतना स्ट्रेस लेते हैं कि इट स्टार्ट्स ब्लॉकिंग आवर बॉडीज। एंड इसी में जो IUI IVF कराते हैं एंड देन दे आर ओपन टू जॉय, इफ यू फाइंड देम, अरे यार ये तो मस्त रह रहे, हैप्पी गो लकी है, द माइंड इज रिलैक्स्ड, हार्मोन्स आराम से बैलेंस्ड है, कंसेप्शन बहुत आसान हो जाता है। तो इमोशंस एक्चुअली डायरेक्टली इम्पैक्ट फर्टिलिटी, एंड नाउअडेज नॉट जस्ट वुमेन्स, also the men's emotion. So both their emotions play a very important role in conception. So thank you so much for sharing this, क्योंकि अवेयरनेस जो है इट इज फर्स्ट इम्पोर्टेंट बेसिक स्टेप। जब तक लोगों को अवेयर नहीं होता, इफ दे आर नॉट अवेयर अबाउट देयर इमोशंस, so they will not be able to handle it. So awareness जो है, every woman should be every time aware that how they are feeling and what they are feeling. तो ये जैसे कि आपने बताया प्रेगनेंसी के टाइम पे इसका बहुत इम्पोर्टेंस होता है। इफ यू आर कामर इट इफेक्ट्स योर बेबी, एंड आपके चैलेंजेस से जो भी आप अप्स एंड डाउन्स आते हैं वी शुड नो टू बैलेंस इट। So absolutely great share, and I hope people are listening to it with a very open heart, because this is something that is the basic thing. But हम अपने स्ट्रेस में ये छोटी छोटी चीजें जो है भूल जाते हैं, हम ध्यान नहीं देते हैं कि what is affecting me emotionally. So we need to be aware of our emotions, as you rightly said. और जो आपने दूसरी बात बताई कि फर्टिलिटी में इसको कैसे इफेक्ट करता है, तो ये भी मैंने कई बार सुना है। मोस्ट ऑफ द कपल्स वो सारे टेस्ट करा लेते हैं, उनका कोई मेजर इशू नहीं निकलता है, बट देयर इशू इज द स्ट्रेस लेवल दे आर हैंडलिंग टू कंसीव, कि whatever symptoms you said कि अब तक नहीं हुआ, ये भी करके देखा, ये भी करके देखा, and when it turns negative it shatters you completely. I totally understand, but the message which we can give is to hold on your emotions, surrender. जैसे कि आपने बताया you were into the spiritual zone at that time, कि आप श्लोका सुनते थे, जो भी practices are necessary. So I would like to know that what are the simple practices that help women to stay positive while trying to conceive? There are many practices. One simple practice while trying to conceive is, first is self-belief. We are, it is a basic key. We are uh, given that gift of reproduction. It is a natural process for which every woman should start believing in it. First, believe in themselves, and every, like, अगर आपका बिलीफ शेक हो गया हो यहाँ वहां सुन के, सोसाइटी में ये करके कि नहीं, मेरा बेबी तो ऐसे ही होगा, या फिर आई नीड ट्रीटमेंट टू हैव अ बेबी, और आई नीड टू टेक, आपका माइंडसेट अगर ऐसे हो गया हो, देन आई जस्ट वांट टू रिमाइंड whoever is watching this right now is, every morning and every night, a beautiful simple thing, just place your hand on your womb, remind yourself of your power, and just say it, like, my body is ready, my body is fully capable, and my baby is coming to me. I am fully ready to become a mother. ये इतना सा आप खुद को बोलोगे ना, actually with feelings and emotions, that shift will happen. Right. Amazing. And anything else? Like one thing you said is uh,
blessing or speaking to baby a heart to heart conversation. So anything, I mean, because देखो जैसे कि आपने बताया कि स्ट्रेस तो आएगा ही आएगा सबके Yes. लाइफ में, बट Yes. आपने बोला कि वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है, तो आप उसकी पॉजिटिव चीज भी बताइए हमें कि हाउ डज कामनेस एंड लव एंड नॉट बीइंग स्ट्रेस्ड आउट शेप्स आवर बेबीज ग्रोथ. It is directly proportional to our baby's growth. Whatever we are thinking, whatever we are doing, it is actually directly proportional. So here comes if you are stressed, if you are like something outside environment is disturbing you, then reflecting on that for that moment actually, क्योंकि उस time पे I think everybody should follow कि is this thing going to matter in the next 5 hours? जो ट्रू. आप सोच रहे हो 5 months and maybe 5 years. If not, please don't take stress about it. Just be cool about it. बिंदास छोड़ दो उसको डिवाइन के ऊपर इन दैट सरेंडर मोड एंड डोंट बी एंड नाउ think about those beautiful things. You should have your like happiness boosters ready. How to get into a happy mood, you should always have that happiness boosters ready, ताकि आपको पता होना चाहिए क्या करने से मेरा मूड चेंज हो सकता है, ओके. because that's very important thing at that time, because our mood many a times is dependent on outside factors. When you start handling your mind in such a way कि it is not more dependent on outside factors but you have full control, ये पूरे faculty पे आपका control है, then amazing things start happening. You start, and happiness is also a muscle which you have to build. There are some people who can go into a overthinking mode every second day, every day actually. सुबह से शाम तक कुछ ना कुछ, अभी ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसे होना चाहिए था, ये नहीं हुआ, आज ये होना था. So like first thing is to take a pause, take a deep breath, reflect. इवन राइट. एक स्टेप भी हो रहा है तो बस कोई बात नहीं, एक स्टेप पीछे भी जा रहे हो, कल आ जाओ आगे. कहीं नहीं भाग रहे हम राइट. लाइफ में, आए हैं जाएंगे. रिमेम्बरिंग दैट वी आर ऑन अ सोल जर्नी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई फील राइट. everybody, we should all remember we are on a soul journey and we are blessed to be born as women, and we are that portal who is carrying that other generation. We are giving birth to the future generation, so shaping it now is your responsibility. It is my responsibility as a mother, it is your responsibility as a mother, and it starts from the womb. It doesn't start like Absolutely. after the baby is born. Yes, absolutely amazing share that the strength is within you and you are blessed to bring a new generation in this world. तो यही बात है कि it's high time that people realize that your emotions, your being happy creates a larger impact on others and even within the baby within you. So yes, shout out to all the women. Stay happy, stay calm, stay blessed. And keep saying to So yourself, I'm a must mazedar mama. And absolutely. be that. एंड पूर्वा जी, ये तो हो गया, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट जैसे आपने बताया कि अदर एनवायरनमेंट, तो सबसे ज्यादा उस टाइम पे हमारी एक्सपेक्टेशंस होती है फ्रॉम आवर पार्टनर हु इज वेरी Yes. क्लोज टू आवर हार्ट, हु मोस्टली तो सपोर्ट करते हैं आजकल, बट समटाइम्स व्हेन द सिचुएशंस आर नॉट गुड, तो कभी तो इन लॉज भी सपोर्ट नहीं करते आपके सीता मैया को प्रेगनेंसी. याद करो. Sorry to interrupt you. I would literally like to say, remember those goddesses who have taken care and built legends. Your emotional responsibility is your responsibility. Yes, partner is there to support you. Well and good, bonus hai. It is a राइट. bonus, but you empowering yourself is more important. Partner आपका है, it is literally the cream on the ये that he's taking care of you, he's being there for you, he's there every day. आपको जो चाहिए नहीं चाहिए वो सारा support मिल रहा है during pregnancy. And yes, it is also teamwork, but here it is your relationship with the baby is going to be different, his relationship is going to be different, remember that. राइट. Like, and that's why I'm saying it is entire
mine and his responsibility also. But here your moods shouldn't be dependent, or our ये shouldn't be dependent on, कि वो मुझे कुछ दे नहीं रहा है या मुझे ये चाहिए वो चाहिए. Here I feel actually remember सीता मैया जिन्होंने राम Right. लक्ष्मण को, सॉरी, लव कुश को इतने ऐसे एटमोसफियर में ये किया, इन आश्रम एटमोसफियर, वेयर शी कुड हैव थ्रोन टैंट्रम्स कि मुझे क्यों भेज रहे हो राम जी, मुझे नहीं जाना, मुझे तो आपके साथ ही बच्चे कर, मीन्स यहाँ पे ही करना है. बट नो, लाइक, रिमेम्बर दो सो मेनी वुमेन. व्हाट अबाउट दोस टाइम्स जहाँ पे राजा रानी का टाइम ही ले लो, लाइक Mm. वन व्हेन men used to go fighting out on wars, Right. were the men present at home? No. No. हैव योर ओन, क्या कहते हैं वो, डेलीगेट योर हैप्पीनेस विथ योर ओन फ्रेंड्स, कजन्स, ये वो बहुत सारे लोग हैं. एक के ऊपर भार मत डालो, मैं तो यही कहूंगी. एक के ऊपर भार मत डालो. हैव अ नाइस किटी एट होम, प्ले कार्ड्स, हैव अ नाइस सत्संग एट होम, सिंग सॉन्ग्स, भजन, या फिर आजकल चलो जूम पे ही अपनी ये कर लो. बट Right. कीपिंग योरसेल्फ हैप्पी इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. Great, great. Absolutely true. It is completely your responsibility and feel it is you are 100% responsible how you are your happiness are creating your baby. So अब पूर्वा जी मैं एक और बार जानना चाहूंगी कि ऐसे और कौन से डेली प्रैक्टिसेस हैं दैट दे शुड डू टू मेंटेन दैट इमोशनल बैलेंस. जैसे आपने बताया कि आप स्पिरिचुअली ड्रॉन थी, तो ऐसे और कौन से प्रैक्टिसेस हैं विच दे शुड डू डेली. Yeah, like first is reminding yourself of your power, self-believing. Secondly, remembering your journey as a soul. That's a beautiful thing. Then there are different practices, like beautiful meditations like Ho'oponopono hai, Oponopono. So that's a beautiful practice in which you're releasing emotional, आपके अगर कुछ blockages है, या you're feeling not well at that moment, or you're just feeling hurt by something. So there you can use methods like uh, लाइक होपोनोपोनो. एक है गर्भ संवाद, जहां पे आप अपने बेबी से कनेक्ट कर रहे हो. इवन इफ इट इज नॉट born or in your womb, you are connecting yourself to that soul energy, जहां पे you are connecting to that soul to soul connection. And if the baby is on your womb, you can just connect it, feel it. There are beautiful practices like गर्भ संवाद, जिसमें those are like beautiful meditations, जो आप कर सकते हो. And that changes the mood entirely. Like it is a lovely mind shifting way where you feel connected, deeply connected with your baby there. एब्सोल्युटली. तो आपने जो बताया कि यू आर गर्भ संस्कार कोच, सो इज दैट डिफरेंट एंड व्हाट एग्जैक्टली इट इज, बिकॉज वो तो आजकल बहुत फेमस हो रहा हाँ, ये एक्चुअली ओल्ड इज गोल्ड है ना, वही है. है. ओके. गर्भ संस्कार, यस. एक्चुअली इट इज एन एंशियंट विजडम जो वापस अभी लोगों को, अभी मॉडर्न साइंस क्या कहता है कि बेबीज इमोशनल, मेंटल, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट स्टार्ट्स इन द वूम. ये तो गर्भ संस्कार में बहुत पहले से कहा गया है. चाहिए वो भक्त प्रहलाद के टाइम पे हो, जब नारद मुनि ने कहा कि हम गर्भ में ही इस बालक को ये करेंगे, कयाधु को लेके चले गए. They took Kayadhu and they kept in Narad Muni ke ashram, and that's where he started Om Namo Bhagavate Vasudevaya. He became a Vishnu. Means that thing was imbibed right in the womb, right? So Garbh राइट. Sanskar it is something I would like to say. It's a lifestyle of both the parents. If you are happy, positive, and um, joyous, your baby is going to get it from you. It is that which you are and which your baby is going to be. So if there is anything you feel you have to rectify अभी से ना, planning, like तभी कर लो. That is the stage. And उसके बाद नहीं होता कि मैं तब जाके करूंगी जब मैं that becomes बाद राइट. में अपने यहाँ. हाँ. So it is actually preparing the blueprint of your baby through your lifestyle.
थ्रू योर लाइफस्टाइल ऑफ हाउ यू आर एज अ पर्सन, वैसे ही आपका बेबी की, लाइक, योर बेबीज इमोशनल, मेंटल, स्पिरिचुअल स्टेट स्टार्ट्स डेवलपिंग लाइक दैट इटसेल्फ. सो या. तो ये जो है, एज यू सेड, इट इज लाइफस्टाइल रिलेटेड. सो मैंने सुना है कि आजकल कई म्यूजिक आते हैं, कई श्लोकास आते हैं. देर आर सो Yes. मेनी थिंग्स ऑन यूट्यूब विच पीपल से दैट ये प्रेग्नेंट, इफ यू आर प्रेग्नेंट लिसन टू दिस, इफ यू आर प्रेग्नेंट लिसन टू दिस. और म्यूजिक के भी अलग अलग फॉर्म्स होते हैं. हाँ, सो हाँ. कैन यू गाइड अस ऑन दैट हाउ डज ऑल दिस इफेक्ट अ प्रेग्नेंट वुमेन? Yes, music is a part of life. Now, if you see, when you listen to nice calming sounds, they send हम्म. nice vibrations. वही अगर आप कोई थकेला ऐसे गजल या ये सुन रहे हो, तो ऑफ कोर्स, लाइक, सी, मीन्स समथिंग which can turn off your mood. It can be some literally banging sounds, और ये, or something which is calm, compose, like, peaceful, wherein हर एक शब्द आपको पॉजिटिविटी दे रहा है. So music हम्म. has a beautiful effect on the mind of the mother and the baby and everyone actually. हम खुद भी देखते हैं, अगर हमारा फेवरेट गाना बजने लग गया अपने आप से, we will start, like, Yes, yeah, humming it or else dancing to it. So then music is a part of life. Just like our food, water and everything, music is also a part of life. और इसीलिए कहा जाता है, definitely. उस टाइम पे नहीं, उससे पहले भी मंत्रा सुन लो, म्यूजिक सुन लो, जो is going to give you positive vibrations. Read lovely stories. उस टाइम पे they recommend holy texts. Like, it's because your baby is taking in right in the womb. Before that also अगर आपको आता है, तो इसमें काफी सारे प्रिस्क्राइब, लाइक, अलग अलग अलग, like there are so many shlokas and stotras. ठीक है, so whichever Right. you are finding you're resonating with. राम रक्षा सुनना है, राम रक्षा सुन लो. हनुमान चालीसा, नव दुर्गा सुनना है, नव दुर्गा. सो इट कैन बी एनीथिंग, बट इट शुड पुट यू इन अ स्टेट ऑफ कामनेस, पीसनेस, एंड यू शुड फील गुड. अगर आप रिजोनेट कर नहीं कर पा रहे हो उस म्यूजिक के साथ, तो, एंड सिंगर के Right. ऊपर भी डिपेंड होता है. सम लाइक अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ वॉइस. सो फाइंड Right. आउट विच इज योर, आपका कौन सा ये है, उसके बाद चूज Okay. एंड मेक योर प्लेलिस्ट एंड यू आर डन फॉर इट. Right. So thank you so much for sharing all these wonderful things, and I hope this will help and have a positive impact on each and every pregnant woman and women who are trying to conceive. So one last message which you would like to give every woman who are already pregnant or preparing for the pregnancy. First thing I will like actually say is, trust your body and the baby also. Most importantly, you have to trust your emotions. The moment, so the first thing is empower yourself. Empower yourself in such a way. Absolutely. Yeah. So that's the first thing. Once you are into that happy, joyful state, nothing, and you are in that unstoppable state, you are giving birth to a person who's going to impact the future generation also. So when you Right. come from that mindset ki I'm not just getting pregnant or having a baby, I'm giving birth to a person who's going to impact the society at large, who's going to create something beautiful, like contribute something beautiful to the society. That becomes a game changer. Right. Like when you operate from that energy. So I would like to say actually, first अपने आप को मस्त बनाओ. स्ट्रेस में हो तो नाडा मत ये करना. First change your energies, change your mood, and then see the magic is going to just flow. You are such a magical person, actually. मतलब, like I also struggled through pregnancy. बट उस टाइम पे मैं बहुत डिप्रेस्ड हो गई थी. काफी सालों तक मैंने डिप्रेशन देखी है ऑफ नॉट कंसीविंग. सो आई ट्रूली विश कि आप उस टाइम पे मेरे साथ होते तो शायद मेरे को वो डिप्रेशन फेस नहीं करना पड़ता. इफ आई वुड हैव अ कोच, अ मेंटर लाइक यू, तो मुझे कभी वो फेस नहीं करना पड़ता, द डिप्रेशन पार्ट.
the stress part, because positive boost देने वाला कोई मेरे साथ है. So for those who are really struggling with the pregnancy or anything else, so go to a mentor, take a proper guidance, the proper hand holding support जो आपकी मदद करेगा. So and being this coach, it is really a magical, and we are blessed to have you as a coach, क्योंकि आपकी positive energy जो है हमको वो positiveness देती है to go through this challenge. So thank you so much for sharing so many things, so many wonderful things which you have shared with us will definitely help us. So to all the audience, those who wish to connect to Purva ji, unka link will be in the bio, how you can connect to her for further guidance, for her help, for her mentorship. तो आप नीचे link पे you can go to the link and connect to her, and feel free to reach out to us for any help and any guidance. We'll be happy to help you. So thank you so much for taking out your time today, Purvaji, and giving us the insightful about pregnancy and motherhood. So thank you so much. थैंक यू सो मच जूही, आपने इतना कुछ बोल दिया मेरे बारे में ना बाबा. थैंक यू सो मच, एंड आई एम ब्लेस्ड to have met you, and that you have given this platform, and you're spreading light through your guidance, through your coaching, and also calling in other coaches also to spread this light. This is an amazing thing which you're doing. Like, I literally, I'm asking God to give you more and more power कि आप भी ऐसे मैजिक इवेंट घुमाओ और जादू मंत्र हो जाए. Yes, Thank you absolutely. so This is much. the mission of every coach or every woman to help each other. And this is the one platform that I have chosen to guide and help everyone. So thank you so much again for your kind words. Yes, thank I you so much. And to all the viewers, you have two amazing coaches over here, Juhi, who is there, and I myself. Okay, so when it comes to healing, when it comes to tarot reading, she's such an amazing person to be there. Like, such amazing results the clients have got. And जादू मंत्र की छड़ी घुमानी है और हैप्पी इसमें आना है तो मेरे पास आ जाओ. I'm going to change your moods and actually tell you, sort out the shit of life, I would say, and just turn into your must version. amazing. Yeah. भाई खुशी तो सबको चाहिए होती है, तो सब आपके पास ही आएंगे. In the sense that नहीं. everyone is seeking happiness, right? So yes, the way to your happiness is Purvaji. Thank you so much. Thank you. So Way to your yes, happiness is you, nobody else. वो टेम्परेरी उस टाइम पे एनर्जी में रह के बाद में पीछे हटना, वो नहीं. इट इज विद इन यू. आप कहीं पे भी जाओ, आप पहाड़ों में जाओ, सर्कस देखने जाओ, कहीं पे भी जाओ, अंदर से खुश नहीं हो तो कुछ नहीं होने वाला. सो इट्स right, ऑल अबाउट योर हैप्पीनेस विच इज देयर विद इन यू. right. Yes. So thank you so much for wonderful session, Yeah. and everyone please stay tuned until we have next guest on Reset and Rise. So see you all next week with an amazing guest with us. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much, everyone.